Very respected brothers, in regards to what are the nights that are about to come, जो आने वाली जो रातें हैं उसके बारे में कुछ जिक्र हो जाए इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह काफ़ी मदद होगी. So we will mention some that in regards to today's topic will be in regards to Laylatul Qadr. Understanding what is Laylatul Qadr, the importance of it, क्योंकि जब तक किसी आदमी को उसके बारे में इल्म ना हो तो उसके बारे में कदर भी नहीं है. If you don't recognize the value of something, then you will not be able to really appreciate something. So you only appreciate it when you have the knowledge of something, when you understand how precious something is. जिस तरह एक सोना होता है, अब बच्चे को क्या पता है कि सोना क्या चीज़ है. Just like a child does not know what gold is, and he starts to recognize the value of it, then he says, oh, this is very precious. So similarly, there are some nights which are about to come. And it's only when we know how important it is, the value of it, we will know how precious these times are. The first thing, सबसे पहली चीज़ जो है कि लैलतुल क़द्र उसका माना क्या है? So, and what is the meaning of that? So उसके चार माने पाए जाते हैं. So there are four meanings of the word qadr. Qadr के चार माने होते हैं. पहला माना, the first meaning is of respect, of honor. ये पहला माना है. The first meaning is that you is something which is honorable, something which is respected. तो ये एक अजीम रात है, अजीम, something which is honorable. दूसरा जो माना है, जो कि वो जो इस रात को पाएगा वो अजीम हो जाएगा. He will become respected, he will become honorable. So this is the second meaning of the word qadr, what it is being referred to here. The third meaning is in regards to the actual destiny. qadr यानी कि माना जो जैसे कि तकदीर के पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी रात है जहाँ पर फैसले लिखे जाते हैं, जहाँ पर जो फरिश्ते हैं वहाँ उनको बताया जाता है कि तुमने क्या क्या काम करना है पूरे साल का. Over here, what the angels need to do, and by the way, the taqdeer is already destined, which is 50,000 years before the earth and the skies were created. तो ये तो सब फैसले लिखे गए थे, अल्लाह ताला को तो पता है क्या होना है, लेकिन इस रात को फरिश्तों को बताया जाता है कि क्या होना है, ताकि वो अपना काम कर सकें. So they can fulfill their responsibility. और कई किस्म के फरिश्ते होते हैं. There are many types of angels, and they've got their own responsibilities to do, because this is why Allah created them. So there are some angels who have been made to take out the soul of someone. So these are Malak al-Maut. These angels, तो कुछ फरिश्ते होते हैं जिनको Malak al-Maut कहते हैं, तो इनका काम होता है कि रूह को निकालना. तो इनको भी बताया जाता है कि किन किन की रूह निकालनी है आपने इस साल. So they name the people who will pass away in this year, their names are told to them. Similarly, then there are those who will be angels who will take the responsibility of blowing in the soul into the womb. So when they blow in the soul into the womb, who are these angels? They are told their responsibility. So similarly, the angels of the rain, those who will look after the rain, the weather, and these are all different angels. They've got their own responsibilities, and they are all told on this particular night of Laylatul Qadr. तो इसी रात को तमाम फरिश्तों को उनके जो हुक्म होता है उनको बताया जाता है. This is the third meaning, and the fourth meaning is the night which it is mentioned as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Qadr, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا. तो यहाँ पर फरिश्तों के जब आते हैं कि ऐसी फौज आती है फरिश्तों की इस रात में, so they come in such a large amount of abundance that it is mentioned that ये रात कदर का दूसरा जो माना है, चौथा माना जो तंगी का, so something which is constrained. So what is meant by this is because the angels are so much, इतने फरिश्ते दुनिया पर नाज़िल हो रहे हैं कि ये दुनिया बहुत कम, यानी कि उनको जगह ही कोई नहीं मिल रही. So they're not finding any place to go because on this particular night there are so many angels which are coming. So these are the four meanings which have been mentioned in regards to the word Qadr itself. Now the second question arises is that when is Qadr? When is Laylatul Qadr? उसकी कुछ अलामात मैं आपको बता दूँ. Some of the signs which are mentioned in various hadiths is that it will be kind of a cool night. It will be kind of a cool night. इसमें ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी. This is one of the signs which have been mentioned in the hadiths.
it will be like a mild temperature. बिल्कुल दरमियानी सा एक टेम्परेचर होगा उस रात को जो लैलतुल कदर पर पाया जाएगा. The other thing is mentioned that it will be in the morning, जब सुबह होगी तो जो सूरज जब निकलता होगा वो इस रेड कलर का होगा. It will be very reddish kind of a color when the sun will be coming out. So you will be able to tell which is Laylatul Qadr. So these were some of the signs which have been mentioned about this particular night. Now we do not know exactly which night it is. हमको ये पता नहीं है कि कौन सी रात है, क्योंकि एक हदीस के बारे में जो हदीस है, अन उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुख़बिरना बिलैलतिल क़द्र فتلاحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر. So this hadith has been mentioned by Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day he came out to tell us ليخبرنا بليلة القدر, to tell us about the night which we have been searching for. ये जो रात है ये कौन सी रात है? The Prophet sallallahu alaihi wasallam came out. उस वक्त जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए उनको बताने वाले थे कि कौन सी रात है. उस वक्त अगर पता चलता था तो you would have known which night it is. But वहाँ पर दो आदमी जग रहे थे. They were debating in regards to a particular matter. فتلاحي رجلين من المسلمين فقال, तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो निकला था तुमको बताने लैलतुल कद्र के बारे में. I came out this night to tell you about which night Laylatul Qadr actually fall in. فتلاها فلان وفلان فرفعت. जब मैंने तुमको देखा कि तुम जग रहे हो, so when I saw you debating and arguing with each other in the masjid, then فرفعت, this knowledge was lifted away from me. Allah Ta'ala ने मेरे से ये इल्म ले लिया. So Allah Ta'ala took the knowledge away from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam could not tell us what night it was. तो यहाँ से हमको सबक हमको पता चलता है. We should learn a lesson from this, that never debate, never argue in the masjids, because even the greatest of blessings will be taken away from you. So we should be very careful of what we say in the masjid. Some people even swear in the masjid. We look to गालियाँ निकालते हैं masjid में. The people, they have to be very careful not to backbite, not to slander other people, because these are great sins, very severe sins, and sometimes we don't even recognize how severe they are. And so, subhanallah, this great blessing was taken away because of this reason. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वआसा अन यकूना खैरन लकुम, और हो सकता है तुम्हारे लिए बेहतर हो. So Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mentioned maybe it is better for you, because this is one of the great wisdoms of Allah subhanahu wa ta'ala, that what if we knew what night it was. अगर हमको पता होता कौन सी रात है, फिर अल्लाह ताला को ये भी पता है कि हम कितने सुस्त हैं. Allah knows how lazy we are. If He was told to us it is on the 27th, तो फिर हमने सुस्ती पड़ती, हाँ लैलतुल कद्र तो 27th में है, तो अभी आराम करो. So we would have relaxed all the way, all the other days, and we would have then thought, let's just do it on the 27th. So this was one of the great wisdoms. Allah wants us to search for it in the last 10 nights. The last 10 nights, this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had mentioned, that this is the night when you will search for it. Now there are many opinions in regard to when is Laylatul Qadr of the last 10 days. In another narration it mentioned an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الآخر من رمضان. तो यह बुखारी शरीफ की हदीस है. रसूल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को आखिरी 10 दिनों में तलाश करो. Odd nights, the awtar, the nights which are odd. So the odd nights are the 21st, 23rd, 25th, 27th, and the 29th. These are the odd nights. So it could be any of them. The other ones which mentioned just research for them for the 10 nights, those are very general hadith. दूसरी जो हदीसें में आखिरी 10 रातों में तलाश करो, ये उस हदीस को ये ज़्यादा नैरो कर रहा है, यानी कि आपको ज़्यादा बता रहा है, या क्योंकि ज़्यादा बहुत मशहूर हदीस है कि you should search for it on the awtar, the odd few nights. So it could be on the 21st, it could be on the 27th, it could be on the 23rd, or any of these odd nights. And in another narration it is mentioned to search for it on the 27th.
दूसरी हदीस में आया कि 27 को तलाश करो, और ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनकी राय थी कि it is on the 27th. This is the opinion of Hazrat Bilal radiallahu anhu, that it was on the 27th of Ramadan. Now in the other hadith it mentions that التمسوا في عشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسية ترقى في سابعة ترقى في خامسة ترقى. The Prophet ﷺ said that search for it in the last 10 nights, and then he said 7 nights, and then he said the third night. So this could be on 3 nights again here. In another narration it mentions that to search for it on the 23rd. एक दूसरी हदीस में ये भी आया है, तो ये हदीस जो है अब्दुल्ला इब्ने उनैस की है. एंड हियर वो फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह के हाजिर हुआ, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना ली बादियतन अकून फीहा, या रसूल अल्लाह I live in a desert, I am a person from the desert. यानी कि वो देहाती आदमी थे, बहुत दूर रहते थे, तो वो मस्जिद नहीं पहुंच सके थे, couldn't come to the masjid. तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वाना असली फीहा बिहम्दिल्लाह, मैं तो अपने घर में ही नमाज़ी पढ़ता हूँ, तो वहाँ क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, वहाँ अजान की आवाज़ नहीं पहुँचती, तो इट्स वेरी फॉर. फमुरनी बिलैलतिन उनजिलहा इला हाज़ल मस्जिद, तो आप मुझे हुक्म करें कि कौन सी रात को मैं इस मस्जिद में आऊँ. यानी कि ये रमज़ान के महीने में पूछ रहे हैं, आखिरी जब 10 दिन शुरू हुए थे. सो द लास्ट 10 nights. Now here Ubaydullah ibn Unais, he is asking the Prophet ﷺ, which night shall I come in? So subhanAllah, it's a very good way of asking of when is Laylatul Qadr. So the Prophet ﷺ said Unzila Laylatul Thalatha wa Ishrin, that comes on the night of the 23rd. तो 23rd की रात को आप आ जाए मस्जिद में. कीला लिउन, तो ये जो वाक़या था रसूल ने फरमाया कि 23rd को आना, तो इससे पता चलता है कि लैलतुल क़द्र 23rd को भी हो सकती है. बाद में इस हदीस में बयान किया गया है कीला लिइब्निही, यानी कि अब्दुल्ला इब्न उनैस, उनके बेटे से पूछा गया था एक मरतबा जब वो फौत हो चुके थे. अब्दुल्ला इब्न उनैस जब फौत हो चुके थे, उनके बेटे से पूछा गया था कैफ़ा काना अबू का यसनाउ, क्या तुम्हारे वालिद इस रात को क्या करते थे? What did your father do on this particular night on the 23rd? So he said, his son is saying, काना यदखुलुल मस्जिद इज़ा सल्लल अस्र, तो वो मस्जिद में दाखिल होते थे असर के वक्त. इससे पता चलता है कि जो पहले तो आप याद रखने कि जो रात होती है वो मगरिब से शुरू होती है, इस कॉल का मगरिब. तो क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि तरावी के बाद हम रात को शुरू करेंगे. नहीं, रात आपकी शुरू होगी मगरिब से. यहाँ इससे हदीस से पता चलता है अब्दुल्ला इब्न उनैस वो तो असर के वक्त से तैयारी कर रहे थे, because as soon as Maghrib hits, you are in Laylatul Qadr. So do not think that it is after Taraweeh or after the Isha prayer. It is not, because many people miss out the great rewards what is before that. लोगों को पता ही नहीं होता, वो गीबत कर रहे होते हैं, दूसरी बातें कर रहे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि ये लैलतुल क़द्र शुरू हो चुकी है. So it could be from that time, so we need to take this into consideration. فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ, तो नहीं निकलते थे मेरे वालिद किसी हाजत के लिए, वो मस्जिद में कोई किसी हाजत के लिए निकलते ही नहीं थे, यहाँ तक कि हत्ता युसल्ली सुबह, यहाँ तक कि फजर की नमाज पढ़. So until the Fajr prayer, he is not free to come out from the masjid. وَإِذَا صَلَّى सुबह وَجَدَ دَابَّتَهُ, फिर जब कि सुबह की नमाज हो जाती, वो जमात के साथ पढ़ते, तो फिर वो जो दरवाज़ा था सामने, वहाँ उनका ऊँट था. So he used to go on the camel, فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَهِكَ بِدَاهِرَتِهِ, then he used to ride on his camel all the way till he used to get to the desert where he used to live. This goes to show that the Laylatul Qadr, it could be on the 23rd as well, it can be on different occasions. Now the other thing to mention is what do you do? अब दूसरा सवाल ये होता है कि अब चलो ठीक है, ये कुछ रातों में तो 27 लिखा है, 23rd लिखा है, कुछ रातों में 21st भी लिखा हुआ है, तो ये आखिरी 10 रातों में से कोई भी रात हो सकती है. तो अब ये सवाल होता है किस तरह हम तैयारी करें, इस रात को हम क्या करें? What should we do on this particular night? The first thing which we should be doing, and one of the most important things is that we should be starting off with istighfar. पहले तो आप इस्तिग़फ़ार करें और तौबा करें. The first thing which you should be starting off with is by doing istighfar, and it is mentioned in the hadith
of Hazrat Aisha radiallahu anha. Hazrat Aisha radiallahu anha फरमाती हैं قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها. हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह अगर मैंने इस रात को पा लिया, if I find this night जो लैलतुल कदर है, इसमें मैं कौन से अल्फाज कहूँ, which word should I say if I happen to find the Laylatul Qadr on the last 10 nights. So the Prophet ﷺ told her the best of the du'as, and it is Allahumma innaka afuwwun. ये दुआ पढ़नी है, कसरत से पढ़नी है. Allahumma innaka afuwwun. इसका माना यह है ए अल्लाह ताला तू अफू है, यानी कि अफूवुन का माना कि माफ करने वाला. एक तो होता है अल्लाह ताला का नाम, दूसरा तव्वाब. तव्वाब का माना भी ये ऐसे है कि माफ करने वाला. अफूवुन ये भी माना इसका माफ करने के लिए, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है. अफूवुन का माना कि ये अल्लाह ताला की ऐसी ज़ात है कि जिस तरह आपने गुनाह किया था, जहाँ आपने गुनाह किया था, जो फरिश्ते थे वो भी उसको बिल्कुल याद नहीं रहेगा. तो ये तो इतना है कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला तो माफ़ करता है, लेकिन ये ऐसा नाम है अल्लाह ताला की जो ज़ात है, सिफत है कि वो क़यामत के दिन लिखेंगे. It's not even written in my book of deeds. Where are all these sins gone? And it is mentioned, Allah will say to him, you ask for forgiveness on that particular day, and I am Afuwun, and I am the one who forgives. I am the Afu, so I made your angels and raised them sin in such a way where you didn't even do them. It is like you didn't even do them in the first place. So हमारा जो हमारी जो जिंदगी गुजरती है, the way we spend our life, we've done so many sins, and we cannot count how many sins we have done. It's like we are in an ocean of sins, and we think of our sins of beat the mountains, but the reality is for Allah subhanahu wa ta'ala this is nothing. Allah ta'ala khud hamata this is nothing. Irji'i ila rabbik, return to your Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala says, I will forgive you even if your sins are on the level of mountain, and He will make your sins disappear as if you didn't do it. So dua jo hai, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. तू मोहब्बत करता है माफ करने से. You love to forgive. Fa'fu anni, therefore forgive me. So this is the dua we should be trying to do as much as possible on the last 10 nights of Ramadan, on when we are thinking that maybe it is the Laylatul Qadr. So this is one thing. We should try to get involved with istighfar and tawbah. इसमें फ़र्क क्या है? What is the difference between tawbah and istighfar? Istighfar का माना आपने दिल से इस्तिग़फ़ार करना है. You need to get this from your heart. So until the tongue you need to say, या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद मैंने ये गुनाह कभी नहीं करना. आपका पक्का इरादा हो गया. So you have made a severe intention, firm intention that you are not going to get involved in this sin ever again. That's one thing. Number two is you say it with your tongue. जुबान से भी कहना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला मेरी माफ़ी, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा. So to mention अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहू. ये जो सेकंड अशूरा जो में आता है, ये दुआ है जो है the second अशूरा जो अभी चल रहा है, the second अशूरा, ये सबसे ज़्यादा जो दुआ करनी चाहिए ये दुआ है. अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहू. और दूसरे जो अल्फाज आते हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे तमाम मेरे गुनाहों से, तू माफ़ करने वाला है. अमदन ओ खतअन, जो जानबूझ के मैंने गुनाह किए, the sins which I knew that they were sins and I still did them sins. Amadan o khata'an, and the sins which I did by mistake, which I did not know. Yeah? So the ones that you did by mistake, alaniyatan, the ones that I did openly in front of the people, or sirran, or जो गुनाह मैंने छुप छुप के किए, कि मैंने समझा कि कोई बंदा देख रहा ही, nobody is watching me doing these sins, so I'll do this. So this dua, Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin aznabtuhu amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan wa atubu ilayh. And I return to you to say this. This is the form of how we should do istighfar. अब तौबा का माना और है. अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, अफला यतूबूना इलल्लाह, क्यों तुम नहीं लौटते अल्लाह ताला के लिए. So तौबा का माना अल्लाह ताला के लौटना. इस्तिग़फ़ार का माना अपने दिल में वो रिग्रेट करना, to have this regret in your heart. तौबा का यानी कि आप अल्लाह ताला के ऊपर वापस लौट रहे हैं. So you are separating yourself from the actual sin itself. So you are separate. आप जुदा हो रहे हैं उस गुनाह से, बिल्कुल आप जुदा हो रहे हैं
जो रूट्स थे उस गुनाह के, अगर मोबाइल फ़ोन था, अब मोबाइल फ़ोन से आप जुदा हो रहे हैं, you are separating yourself from the mobile phone. If it is internet which is causing you to do the sin, then you separate yourself from the internet. If it is your friends, then you need to separate yourself from those friends, that particular company which is causing you to do the sin. ये तौबा है जब आप अल्लाह ताला के पास लौट रहे हैं. So to return to Allah subhanahu wa ta'ala, this is what is meant by tawbah. ये दूसरी चीज होगी. Do tawbah and istighfar. Then also आपसे कोई ऐसी गलती ना होई जिसकी वजह से आपने किसी का दिल ना दुखाया हो. You might have hurt someone's feeling. क्योंकि दूसरी हदीस में आता है कि एक आदमी पूरी रात नमाज पढ़ता है, इस्तिग़फ़ार करता है, लेकिन फिर भी उसके गुनाह माफ़ नहीं होते, क्योंकि उसके जो गुनाह हैं वो लोगों से मुताल्लिक़ हैं. They are linked to certain people. So you might have hurt the feelings of someone else. You might have broken their heart. You might have said something harsh to them. Until this day they are feeling it in their heart. Because sometimes we don't recognize and we say some things that people are not aware of it. And it's very harsh. And people all their life they feel this. So we should ask forgiveness. तो आप लोगों से भी माफ़ी मांगे. लोगों से माफ़ी मांगने कि खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती होगी. If I made a mistake by unknowingly or knowingly, please forgive me. This is the way to start the night. Because if they are going to forgive you, Allah is going to forgive you. ये आप याद रखने, एक तो हुकूकुल्लाह होते हैं, अल्लाह ताला के हुकूक, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे. लेकिन एक होते हैं हुकूकुल इबाद, the rights of the people. Allah will not forgive until the people don't forgive you. इसलिए लोगों से भी आप माफ़ी मांग लें. This is a very good way to start the night. इस तरह आप रात को शुरू करें. दूसरी चीज़ है, फिर आप सदका भी दें. इस रात को आप सदका देंगे, it will be multiplied by so many times you cannot even possibly imagine. So to give some kind of सदका, एक पौंड भी आप दे दें, कुछ भी आप सदका दे दें इस रात को. बेहतर तरीका तो ये आप हर रात को जो आखिरी जो 10 दिन हैं आप इसमें कुछ सदका दे दें. So whether it's £1, £10, £20, whatever you can give some kind of sadaqah. And the other thing is dua. Dua आप कसरत से करें. So do dua for all the ummah. Do it for yourself, do it for the ummah, do it for the people in the masjid. And because this is not something which you only need to do for yourself. We need to think about that Allah's rahmat is so much. एक हदीस में तो ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो मस्जिद में बैठा था, दुआ कर रहा था. And he was saying that, oh Allah, have mercy upon me and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. या अल्लाह मेरे ऊपर रहमत करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये बात सुनी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम heard him once he was saying that, and he said that, why is it that you have constrained the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala? तुमने तो अल्लाह ताला की रहमत को बिल्कुल तंग कर दिया. अल्लाह ताला की रहमत तो इतनी है कि पूरे जहान वालों को तुम्हारे लिए भी बहुत काफी है. So do dua for everyone. Don't just limit it to yourself and the odd few people. So this is the way to do dua for all the people. And we should remember our brothers and our sisters in Palestine, in Burma, in Kashmir, and all these other places where zulm is happening to the Muslims. So this is one way of how we should involve in ourselves in the particular night. Also, we should stand in the salah. आप कुछ रकात नफल भी पढ़ें. You should stand some night after the तरावी के बाद आप कुछ नफल खुद भी पढ़ सकते हैं. This is a good way of how to do the night as well, to spend your night in worship. और सबसे बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप ये जो है ना ये रात जो है जमात में पढ़ें. ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज आप जमात में ही पढ़ें. एक हदीस में आता है जो शख्स ईशा की नमाज जमात में पढ़ता है उसने गोया के उसने आधी रात इबादत में गुजार दी है. It's equal to worship of half a night. And the one who reads Fajr namaz in Jamaat, it is as if he has worshipped Allah all night long. Subhanallah, this is the very beautiful hadith of the Prophet ﷺ, where he's telling us that if you were to catch these two locations in Jamaat, you will get the reward of all night. So subhanallah, we should not miss out this opportunity. Okay, and the other thing which the Prophet ﷺ mentioned was in regards to doing istighfar. Istighfar we mentioned, and to do tawbah and sadaqah, and to do tawbah, and also to read some part of the Quran. अलग-अलग सहाबा किराम से दूसरी रिवायतें मिलती हैं. कुछ सहाबा किराम ने सदका के बारे में जिक्र किया, कुछ जो सहाबा किराम थे उन्होंने नमाज के बारे में जिक्र किया. तो to stand some portion of the night
doing इबादत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरी चीज़ मैं ये जिक्र कर दूँ, कुछ लोग ये ऐसे भी टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं कि जो शख्स 20 रकात पढ़ेगा या 10 रकात पढ़ेगा नफल तो उसको ये वो मिलेगा। तो ये बिल्कुल मौजू हदीसें हैं, इसमें कोई असर नहीं है। There is no reality to this. There is no particular worship. कोई ख़ास इबादत नहीं है। जिस तरह आप करना चाहते हैं आप कर लें, जिस तरह आपको फिट होता है आप कर लें, जितना आप कर सकते हैं वो कर लें। So this is, take note of this. There is no specific amount of worship that you should be doing. There is no exact fixed worship that you should be doing on this particular night. So these are some of the faza'il which we should take into consideration about the Laylatul Qadr. The other thing to mention is about itikaf. जो इतिकाफ कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ये बेहतर from all the people who are visiting itikaf, this is the best for them, because ये तो हर हाल में अपना लैलतुल कदर पा लेंगे. They will find the Laylatul Qadr in every occasion. हमारे लिए जो they out to the masjid, they in and out, they might not find the Laylatul Qadr, but the people who are sitting in itikaf, they will 100% find the Laylatul Qadr, and they will be rewarded twice as much as the whole community. And it is mentioned in one hadith in Ibn Majah that the person sitting in itikaf, it is as if he is fulfilling the responsibility of others as well. So he will be rewarded not only for the ibadat from himself, but also the ibadat of the local community, what they are trying to achieve. दूसरा जो मायना इतिकाफ का जो होता है, एक seclusion. The meaning of the word itikaf is seclusion, to exclude yourself. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले बैठते थे गारे हिरा में. He used to sit himself बिल्कुल अकेले गारे हिरा. He used to think about Allah subhanahu wa ta'ala. ये तफक्कुर करना, ये सोच पैदा करना, ये नहीं कि सर हर वक्त जो जिक्र होता है वो कई किस्म का होता है. एक दिल का जिक्र होता है, एक जुबान का जिक्र होता है, एक सोच का और तफक्कुर का जिक्र होता है. तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे जो गारे हिरा में, ये तफक्कुर का जिक्र था. He used to do the zikr by contemplating that why Allah subhanahu wa ta'ala created us. Look at the beauty of how Allah has created the stars and the days, and how is it that the people can go wrong and they have started to worship the idols. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to worry about them and used to think about Allah subhanahu wa ta'ala. So to do tafakkur, this is a very beautiful way of how to remember Allah subhanahu wa ta'ala. So this is how a person should spend his night in itikaf. He should do other types of worship as well as doing tafakkur and spending his time in as much as he can. Another thing which a person should do when he's in itikaf is that he should try to separate himself from all sorts of media. He should separate himself from all sorts of WhatsApp. ये WhatsApp जो है इसको बिल्कुल खत्म करना है. So this is a form of fitna. Also any kind of YouTube, game, all these games, Fortnite, whatever it is, complete you cut yourself off from this, especially on the last 10 nights, because this is a time, an opportunity which you will not get again. Allah subhanahu wa ta'ala will give you certain opportunities in your life which you might not get again. Allah ta'ala आपको ऐसी मौके देगा जिंदगी में कि आपको शायद ये मौका कभी फिर ना मिले. आप खुद अंदाज़ा लगा लें पिछले साल कितने हमारे भाई बहन थे वो हमारे साथ थे. इस साल उनको मौका नहीं मिला कि वो इस रमज़ान हमारे साथ गुजार सके. क्या पता अगले साल यहाँ होंगे या नहीं. We do not know if we are going to be here next year. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a long life, but we do not know how long we are going to live. So why not make the most of this opportunity and make the most of what Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon what's been said.